Welcome to Be the Change. I'm really excited today because the other side of my screen is a wonderful guest. While you guys are joining in, and we'll be talking more about the guest. First, I'll say hi to Shilpa. Hi, Shilpa. Hello, Jyoti. How was you? I am great, Shilpa. So it is very nice to talk to Shilpa today. I spoke to her in the afternoon, and Shilpa Salve is a wonderful female. She's a life coach with a combination of yoga trainer. Wonderful. This is a very very difficult combination, and very few people do such combination, Shilpa. I have seen life coaches being a psychologist or a psychiatrist or a counselor. But your combination is a wonderful combination. So, people who are watching our show now, and I'll broadcast it later, you can ask any questions to Shilpa related to health, life, emotional well being. And also, you can connect with her because in the description, I will give the details of her. So, you can connect with her. And if you want any such thing, generally also, we'll have the conversation more about this in the show. First question to you, Shilpa, is what is that one change which happened to you after the pandemic or while pandemic? So pandemic was quite a big change for everyone. First, it Correct. was very difficult for all of us to accept that thing that world can be shut down, and things were happening around with the COVID-19, and everyone was little bit of scared, and at the same point of time, everything was shut. So there was Correct. no venting out of emotions, also no going out, and it was like very difficult time to everyone. But Mm-hmm. that also gave few good opportunities, like for those who find goodness in a disguise, for these kind of people, and I Mm-hmm. was one of them. So I Okay. was taking the sessions offline, and then I Oh. started immediately. I shifted to online sessions, and Mm-hmm. people also supported all the people who wanted to join, and there was a mindset shift in people that yeah, Mm-hmm. these things can be taken online also. So that Wow. was a big change in a positive way, I can say. For me, it was like shifting, and then it helps me to reach globally, because earlier it was to a limited state, limited city, but Correct. now it's global. It's global. That's So wonderful. I'm very much glad that now I am able to serve people around the world. So that is the biggest change which happened during COVID. That's great, Shilpa. That is a maximum change happened to many women out there. Shilpa, Mhm. my next question to you is like, you being a life coach is very, how this thing of taking up life coach, because I have seen many people I've interviewed in the past almost a decade. I have seen very few people taking a life coach because it needs lot of perseverance, consistency, and it needs lot of patience because you have to handle and set the person's life. It's not that you give a medicine to them and they're fine. मतलब the process Right. बहुत मुश्किल होता है, तो फिर क्यों आपने लाइफ कोच का वो हिस्सा लिया? लाइफ कोच एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में उतना हम्म, उस तरह से दे आर पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट येट, ओके, द वे correct. इट इज meant. So Mhm, I thought, and this is very helpful for the people and any age criteria, like for kids also who are going through mhm, puberty time, for females who are working also, who are housewife also, like whatever criteria a woman is, and then for working men, because they mhm, are under constant stress. And mhm. the scenario nowadays is changed from physical efforts to mental labor, we can say. We have to put our mind to work 24 by 7, but हाँ, we are not brought up in that way. Our childhood was totally different, okay, correct. and we were like groomed
to women were groomed to take care of family. अगर जॉब है भी तो किसी बैंक में है या स्कूल में है या किसी स्कूल गवर्नमेंट ऑफिस में में, okay, to handle house and work at the same time. And बिल्कुल. there was no digital platforms, right? But अभी जो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारे आंखों के सामने, लाइक आई my in front of my eyes, because I am in the older generation, from the older Mhm. generation. But Of course. whatever we have seen, लेकिन जब हमको बड़ा किया तब तो ये सब कुछ भी नहीं था, तो हमारा Mhm. माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं है Mhm. कि ये सब हाउ Mhm. टू टैकल दिस सिनारियोज, क्योंकि ये सब Mhm. अभी अभी आए हैं सिनारियोज. सो लाइफ Correct. कोच वुड हेल्प यू टू Mhm. transform your mindset, okay, to Okay. give you that perspective of life which is Mhm. needed as at this point of time. Whatever changes have come across the world, the digital platform, we can say in simple words, the social media, and the type of work which has changed, कि आपको Mhm. बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, सिर्फ यहाँ पर ही लाना पड़ता है, आपके ब्रेन पर ही होता है ज्यादा हाँ प्रेशर. हाँ. आपको बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लिखना है, बहुत ये करना है, काम करना है. इट इज देयर, Mhm. दैट ऑल्सो इज देयर, बट स्टिल द मेंटल प्रेशर इज वेरी डिफरेंट, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है. सो लाइफ कोच हेल्प्स यू इन दैट, guides you in that. Mhm. And the way I take my life coaching is I have the added advantage of yoga, which we'll talk next, like In the process. के Correct. बात करेंगे. So what I do as life coach is I hold the person's hand and Mhm. like entirely uska all areas of life. Sometimes people come with one Mhm. problem to me, but Mhm. they Mhm. doesn't understand that there is a problem to the other side also. See, life is not हाँ. just a pure profession, life is not just your family, it's a combination of your personal growth, your family, your closer family, जो न्यूक्लियर फैमिलीज है आजकल, आपके पेरेंट्स का Mhm. फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, पियर्स है, लाइक there's a big सर्कल अराउंड यू. सो Correct. उस Correct. सबको आपको मैनेज कैसे करना चाहिए, and where exactly does that problem lies which is Mhm. affecting your particular area. अगर फाइनेंस है Correct. तो उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, अगर Mhm. रिलेशनशिप है तो उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, दैट वी Mhm. फाइंड आउट फ्रॉम द लाइक सेशंस, ड्यूरिंग द सेशंस. और उसके Mhm. बाद हम उसको फिर ये कर लेते हैं, गाइड कर लेते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर लेते हैं. दिस इज व्हाट अ लाइफ कोच डज. Correct. You gave us a clarity of what a life coach is, how she or he is different from a counselor. Because many people feel that life coach is almost like, a counselor who gives, a session or one or two session on a particular thing. Like if I have a problem in career or if I have a problem with one particular person, I come to you and ask and I get. But you are saying life coach will be forever, isn't it? Correct. And Yeah. to be precise, like to differentiate from counseling, therapy, or Hmm. life coaching, the Hmm. biggest difference is you go to a Hmm. counselor or to a therapist only when you are in trouble. But Correct. you can opt for life coaching in the beginning as well. Mhm, Like you, it's mhm, better to opt for a life coach in the mhm, beginning of your career, in the beginning of your relationship. Like जितना mhm, जल्दी आप कर सकते हो उतना better है, before you get into problem. Or though you have already in problem and then you opt for that option, what is the difference? Counselor, he tackles the problem in the past. आपका correct, हिस्ट्री correct. कैसा है, आपको किस चीज से अफेक्ट हुआ है, एंड what why that thing is affecting you. So he will find out that and then he will guide you, or he'll counsel you on that point. Mhm, But whereas a mhm, life coach will always see what's your goal, what you want to achieve in mhm. future. Okay, the past thing are there and they have affected you like that, and then stop. Okay, and Oh, then the life coach guides you further, how correct, accepting those facts, putting it behind, you can move forward. That is what we do. And therapist is correct. entirely the different thing which gives you medicines also. Yeah, 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 yeah. That is a So, psychiatrist. yeah, So, psychiatrist.
Good that you gave us the differentiation, and people who are watching our show now and will watch us later, you connect with Shilpa on this particular thing of emotional problems people have in different phases of life, and they think that I am only having that problem, and why me is also there, especially with women. For any such things, you can just connect with Shilpa. Her number, I will put it in the comment section and also in the description for connecting with her. Now, Shilpa, the thing is, if you see, today's women is having everything, right? Uska ghar acha hai, she's working in a corporate, she's having a happy family, she's having everything sorted, everything is there. But if you see 20 years back, matlab, jab, 90s, 80s, mein, when our parents were there, they were much more happier than us, who we are in our 30s and 40s, in between the middle age crisis, what I'm saying. We are not happy in spite of having so much things around us. But I found that our aunts and our parents were happy with even limited things. Limited They might things. not be having this much of salary, this much of facilities, लेकिन वो लोग बहुत खुश थे compared to us. We have so many things, but still we are not happy. Why do you think so? uh, Main reason is the expectations, not from others but from them. A Oh, woman, like, उनको लगता है कि अगर उनके ऊपर सुपर वुमन का टैग नहीं है एंड दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ सुपर वुमन, दे आर okay. फेल, नो दे Oh. आर इन फेलियर. तो ये मेरे साथ भी हुआ था Mm-hmm. इनिशियल डेज में, व्हेन ड्यू टू माय लाइक हैविंग किड्स एंड हस्बैंड्स जॉब जो ट्रांसफरेबल था. तो उस वक्त मुझे हमेशा लगता था कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक आई वॉज करियर ओरिएंटेड, और मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, आई हैव बिकम अ हाउस वाइफ. सो वो जो एक एक्सेप्टेंस था ना कि मुझे कि अभी ये है और दिस इज रिक्वायर्ड, वो नहीं Mm-hmm. था उस वक्त कुछ दिनों के लिए काइंड ऑफ. बट Correct, correct. होता है. हाँ. वो होता है, सी आपका Mm-hmm. आपका एक कुछ ड्रीम होता है, आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको वो अचीव करना होता है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सराउंडेड थिंग्स ऑल्सो वुड हेल्प यू डू दैट. कभी कभी कुछ चेंजेस आ Mm-hmm. जाते हैं, दैट Mm-hmm. टाइम यू नीड टू मेक Mm-hmm. चॉइस. Mm-hmm. वो चॉइस आप जिस दिन कर लोगे ना, आपको ये सारे Mm-hmm. प्रॉब्लम नहीं आएंगे. सी आर पेरेंट्स, दे वर टोटली क्लियर, दे वर क्लियर कि मुझे Yeah. जॉब करना है, मैं इसी तरह से मेरा घर संभालूंगी, एंड मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है. माई मॉम वॉज वर्किंग वुमन, और उन्होंने उनके उम्र के 18 साल से काम किया है टिल शी गॉट रिटायर्ड. तो Oh. उतना उन्होंने काम पूरे किया है इतने सालों तक, बट शी वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ये करना है, Mm-hmm. और इतने काम में मुझे हेल्प है, इतने काम में मुझे हेल्प नहीं है, बट शी वॉज ओके विद दैट. तो उनको ये सारे, अभी वो मुझे पूछते हैं कभी कभी कि यार आप लोगों को कितना बस सोचना पड़ता है, नहीं आप लोगों को कितना देखना पड़ता है, हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं था. तो ऐसा नहीं था. ऐसा ये सब नहीं था, तो आपको बच्चे भी है. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. कोई भी वुमन हो जो हाउसवाइफ भी हो या वर्किंग हो या खुद का कुछ हॉबी मेंटेन करती हो या खुद का कुछ बिजनेस करती हो, एंटरप्रेन्योर हो, किड्स के स्टडीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. वाई आप हाँ. क्यों प्रेशर लेते हो? उनके स्टडीज का Mm-hmm. प्रेशर आप क्यों लेते हो? तो ये अननेसेसरी Mm-hmm. स्ट्रेस को ऊपर लाते हैं. ऊपर Mm-hmm. अगर आपको कुछ घर में करना है तो भी सिंपल करो. गेस्ट को बुलाना या उनको बहुत दिखाना या करना, ये प्रेशर आप अपने आप पे क्यों लेते हो? जरूरी नहीं है. बिल्कुल. ओके. जरूरी नहीं है. तो यही सारी चीजें हैं कि बावजूद हमारे पास सब फैसिलिटीज है, वी आर नॉट दैट हैप्पी बिकॉज हमारे खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है कि मैं ये भी कर सक, मतलब आई हैव टू डू दिस ऑल्सो. बिल्कुल हाउ इज तो. इट पॉसिबल कि मुझे ये हम्म. नहीं आता? हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छा. मुझे ये नहीं आता, तो अच्छा. मुझे ये भी तो आना चाहिए. मुझे खाना भी अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए, मुझे इवेंट भी मैनेज करना आना चाहिए, और मुझे अच्छा भी दिखना चाहिए ऑल द टाइम, मुझे फिगर भी मेंटेन करना हम्म. चाहिए. और जब
खुद के लिए 5 मिनट भी निकालो शांति से बैठने के लिए, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ They टाइम। don't have that. Yeah. ओके, कि खुद खुद के लिए बैठ के जस्ट 5 मिनट्स यू बी योर सेल्फ। भूल जाते हैं लेडीज की वो रियलिटी में क्या है। दे डोंट नो हाँ, दे आर समवंस मदर, दे आर समवंस वाइफ, दे आर समवंस डॉटर इन लॉ, समवंस डॉटर, बट दे डोंट नो कि वो खुद क्या है। एंड व्हेन wonderful. मतलब वहीं पे वो स्ट्रगल हो जाता है एक्चुअल में, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट आई फील एंड माय ऑब्जर्वेशन इज दैट। Very true. Very true. Very true. So, Abhi, you we are coming to back to you now. You are also a yoga trainer. Now, life coach and yoga trainer, how are you mixing it, and how it is helping people to reach what they want? Matlab, you see, there is a misconception in people that, yoga is taken only when they have, some health issues like diabetes or arthritis or whatever. और if they are 40-45 के ऊपर है तो करना चाहिए, नहीं तो you can आराम से you can eat and sleep happily, work, all that. So what do you have to say? How can you help in bringing yoga along with life coach to train people and get their mindset normal? How this is helping you? Uh, so yoga was my childhood hobby, you can say. I'm doing yoga since my age, like 13 years. I was in school and I was in a team of that yoga team. तो तब से है, तो वो मेरे माइंड में हमेशा से था। बट देन उसका बेनिफिट्स भी आई नो कि इसका बेनिफिट्स Mhm. बहुत ज्यादा है, बट ड्यूरिंग दोज टाइम ना द क्लैरिटी वाज नॉट देयर विद पीपल। Mhm. द सेम यू मेंशन द मिसकंसेप्शंस की 40s के बाद ही योगा करते हैं, यंगस्टर्स को तो जिमिंग जाना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, काइंड ऑफ वो ट्रेंड था, जिमिंग वाला ट्रेंड बहुत था। तो हाँ, और अब ऐसे हो गया है ड्यू टू दिस लाइफस्टाइल विच वी जस्ट डिस्कस्ड बिफोर, कि correct. स्ट्रेस वाला जो काम है, तो Mhm. सडनली पीपल आर गेटिंग दिस डिसीजेस which Mhm. earlier our parents used to get in 50s or 60s, now 60s, the हाँ, 60s में, तो 30s में ही लोगों को अभी वो आना शुरू हो गया है। एंड नाउ बिल्कुल, इट्स वर्ल्ड नोन दैट इट इज लाइफस्टाइल डिसीजेस, इट इज नॉट एनीथिंग जो जेनेटिक में हो या जो इन्फेक्शियस हो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी कोविड था तो इट वाज अ इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता करेक्ट, था, बट जो करेक्ट, डायबिटीज, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज है विमेन में, और सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एवरीथिंग एनीथिंग यू कैन मेंशन, तो वो सारे हाई बीपी, थायराइड, तो ये सारे जो सब है वो कुछ दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल और बैड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। तो जो है उसका। तो हाउ डज योगा हेल्प दैट? सो बेसिकली योगा इज नॉट only that exercising part. Exercise, which we call asan, is one part of yoga, right? In करेक्ट। yoga we have different other things also. So we have breathing exercises, we have few do's and don'ts to follow, which helps us reduce stress. और ये सारे जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेज है, दैट उनका एक कॉज स्ट्रेस भी है। सो व्हेन यू हैंडल योर स्ट्रेस, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां है उसका पैरामीटर्स जो है वो नीचे आने लगता है। एंड व्हेन यू हैव द लाइफ कोचिंग विद दैट, आपका पर्सपेक्टिव जो है, जो आज के सिनारियो के लिए प्रिपेयर हो रहा है। So this is how I हाँ, combine. Okay, so this is how the combination is done कि आपका लाइफ कोचिंग भी आपको साथ में है, जो मॉडर्न एज पीपल के लिए है, इजी टू अंडरस्टैंड, साइंटिफिक टूल्स के साथ होता है। कोई लाइक फॉर मी, फ्रॉम माय साइड, इट्स साइंटिफिक टूल्स के साथ। लाइफ कोचेस डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, दे हैव देयर हाँ, ओन सेट। बिल्कुल। ओके, तो मेरा जो है फिर वो साइंटिफिक होता है, जो योगिक लाइफस्टाइल है उससे आपको ये मदद मिल जाता है, देन यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नॉट बिल्कुल, ओनली नॉट ओनली द फिजिकल, एट द फिजिकल लेवल, बट योर इमोशनल लेवल, your mental level and your spiritual level also, you know, you go on a higher level.
सो बिल्कुल। दिस इज हाउ वी कैन कंबाइन दैट एंड आई डू दैट वे। और फिर लोगों को, पीपल कम टू मी और बोलते हैं कि मैं 2 ही दिन हो गया आपका सेशन कर रही हूँ, देन मेरा माइंड इतना काम कैसे हो गया, या फिर इतना जल्दी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बॉडी हल्का हो गया है, या 1 महीने के अंदर इंचेस क्यों रिड्यूस हो गया, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि लोगों का ये कंसेप्ट है कि योगा से आपका वेट कम नहीं होता है, सिर्फ वो डाइट से या जिम से होता है। डाइट भी रिक्वायर्ड है, बट योगा से भी होता है, इंचेस लॉस आपका हो जाता है, वेट कम आपका हो जाता है, इफ यू डू इट प्रॉपर। ओके। तो ये सारे बेनिफिट्स है योगा के भी। और लाइफ लाइफ कोचिंग अगर आप साथ में करते हो तो एडेड एडवांटेज है उसका। सो दैट इज वाई आई, व्हेन आई केम टू नो कि इंडिया में अभी तक इतना इसको अवेयरनेस स्प्रेड नहीं है, लाइफ कोचिंग का भी बिल्कुल और नहीं है, योगा का करेक्ट। भी। yoga, what I see is only when your doctor is prescribing do exercise, then हाँ, people nowadays come to me। योगा कर लो, यू डू हाँ, मुझे फर्स्ट 1 आवर अल्सराइटिस हो वहां गया है, पर। मुझे पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी का इशू है, तो आई वांट टू कम फॉर द सेशन। तो इस तरह से आते हैं। करेक्ट। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शुरुआत से करते हैं, कुछ बच्चे हैं मेरे पास, तो फिर उनका फोकस लेवल बहुत बढ़िया है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, और उनका जो मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं जो हम बड़े नहीं कर सकते। तो वो वाला बेनिफिट बच्चों को बहुत जल्दी मिलता है। तो इट्स गुड फॉर बिल्कुल। एवरीवन। किसी किसी को लगता है रिलीजियस थिंग है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ना, रिलीजन के बिल्कुल बात नहीं है। करने को नहीं है। एक चीज, जैसे आप एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बर्थडे को केक कट करना, ओके, वो तो इंडिया का कल्चर नहीं था, बट यू यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट, वी बर्थडे हैव को अडॉप्टेड इट, या। करना। तो व्हाई यू आर नॉट अडॉप्टिंग द थिंग विच इज क्रिएटेड हियर इन दिस बेनिफिशियल, लैंड हाँ, करेक्ट। and करेक्ट। beneficial for you in all the aspect of your life। तो वो तो वेरी आप ट्रू, ऑप्ट वेरी कर ही सकते हैं। तो वो कुछ रिलीजन के साथ नहीं है, और ना ही सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो आज ट्रू। की डेट में व्हाई इट इज मोर, अभी आजकल जो हीरोइंस जो है, हमारे एक्ट्रेसेस जो है या एक्टर्स भी है, वो भी दे आल्सो गो फॉर योगा सेशंस, आफ्टर डूइंग करेक्ट। जिम एंड ऑल फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, दे नीड टू गो gymming। Okay, but again they go for yoga also योगा to keep सेशंस, their करेक्ट। mind in its place, right? क्योंकि उनको तो बहुत करेक्ट। ज्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो दिमाग भी जगह पे रहे उसके लिए दे गो फॉर योगा। जिम के बाद आपका बॉडी जो है ना, मसल्स जो है वो सोर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टन हो जाता है। योगा करने से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। जिम में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाते हो। ओके। बिल्कुल। आपको आपको वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ऑलरेडी लाइफ में, और आप बॉडी पे और स्ट्रेस डालोगे तो माइंड तो फट ही जाना है एक दिन, तो इतना सारा प्रेशर हाँ, देके। वही तो। सो व्हेन यू गो फॉर योगा उसी टाइम पे, तो आपका बॉडी भी रिलैक्स होता है, माइंड भी रिलैक्स होता है। सो बहुत तरह के बेनिफिट्स है, वो एक सेशन में शायद मैं बता भी ना पाऊँ कि हाँ, आपको योगा बता नहीं करने पाए, से या बिल्कुल। तो क्या क्या या बेनिफिट्स होते हैं। या we will. So Kavita, she's joined us and she's saying good going. Shilpa, Ami is saying well, nice show, and Arsu is saying good ma'am. So good that every people are liking you what you're telling. But see, if you want to connect with Shilpa, you can connect with her. I will put all the details after this show. You can connect with her and talk to her in person, whether it is yoga, because now it's globalization. You can connect with her, or she will also help you digitally. You can be anywhere in the world. She can connect with you and help you on yoga and life coaching together. And that's a wonderful, deadly combination. Now, going on, Shilpa, uh, today's middle-aged women, if you see, we discussed about the physical aspect. Now, when you come to the emotional aspect of today's women, they have this thing of being self-pity. Like, I have noticed with many women, especially 30 plus women, have been in the mode of, what do you say, self-pity. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मुझको ही, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मुझे ही सब लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं। मतलब वो खुद का डिप्रेशन में वो चले जाता है। देयर इज नो
reason for it. And when you go to a psychiatrist or a psychologist, they will make her to sleep with giving sleeping pills. Now, sleeping. I'm just Right. saying this is what is Yeah, yeah, happening. yeah. It happens. It happens. It happens, right? Because there is no particular reason for it. There is no particular reason because she herself or is doing that particular problem. Now, what do you have to say to women out there that why is she or she is especially women going through that process of self victimization? ये जो सवाल होता है व्हाई मी, उसका Mm, जवाब मैं ये देना चाहूंगी बिकॉज यू से इट, mm, दैट्स व्हाई मी। ओके, mm, mm, mm. आप ही लेते हो तो आप ही उसको आंसर करते हो व्हाई मी बिकॉज यू से इट, क्योंकि बाकी तो कोई बोल नहीं रहा है व्हाई यू, बाकी तो कोई बोल नहीं रहा है इट्स यू, no one is saying Correct. that, correct, but you are saying that why me? Okay, so here today only I spoke to my maid. Okay, मेरी जो Okay. maid है, तो Uh-huh. she has two kids, husband is not Okay. helping her, and this is the scenario Okay. of every maid around here. She has two very little kids, और Okay. उसका husband है who is not helping, and Okay. getting together with her mother-in-law, beats her Mm, sometimes, no, doesn't give her any money and doesn't help her at all and doesn't support her at all. Okay, correct. what she said me कि ना मैं Mm, उसके साथ ज्यादा झिकझिक करती हूँ ना इधर उधर झिकझिक करती हूँ, आई कम हियर, आई वर्क, आई गेट माई मनी एंड आई मेक माई किड्स प्रायोरिटी, और उनका जो भी है खाना वाना घर का भाड़ा वाड़ा दैट आई डू। So okay. see how simple. See, she has Ah, too many problems which we can't even correct. imagine. उनका रहने का घर का पता नहीं होता है, एनी मोमेंट उनको घर से निकाल देते, बोलते दूसरे घर, निकाला जाता है उनको यू हेल्प नो के लिए कोई भी नहीं है, उनको 10 घर का बर्तन करके खुद अपने घर जाके अपना बर्तन करना ही तो है, अपना बर्तन झाड़ू साफ पोछा करना है। करना ही है, हाँ, राइट, पानी बिल्कुल दूध से बिल्कुल भर के बिल्कुल। लाना ही है, बट शी इज क्लियर। So why me when you are asking, you just look around you, you will get the answer कि इतना सब मेरे साथ जो अच्छा है वो भी तो वाई मी है, कि सिर्फ वही मुझे ही भी क्यों है। लगता है मुझे क्यों नहीं जाना पड़ता है, अपने घर के बर्तन भी हम नहीं कर पाते हैं, एक दिन मेड नहीं नहीं कर। आती, हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आती, वी कॉल समवन एल्स, और हम्म, जमा करके रखते हैं बिकॉज वी हैव अदर सेट ऑफ यूटेंसिल्स, वी यूज दैट। दैट करेक्ट करेक्ट। सो बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। ये सबसे सिंपल, कीप इट सिंपल, लाइक विमेन ना नहीं बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी लॉजिक बताई आपने, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है क्यों। Yeah, why me? That question women should not ask the मस्त, present generation. That victim या thing they shouldn't go. दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल वाईमी के लिए, आस्क योर गो गो आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर मेड, नॉट यू, इट्स नॉट यू एट ऑल। Seriously, when we look around, we can understand that other people are suffering more than us. Perfectly said. No, that is why it is Shilpa, because Shilpa can show you the direction जो आप पकड़ सकते हैं. So that's nice, and warm welcome, Shilpa ji. Great to see you. Rocking, perfectly said, well said. Yes, Shilpa is saying very well said. If you have any question, you can pop in. We'll be for a couple of minutes more. So, Shilpa, my next question to you is, if you see if you see comparatively on the mental health, women are more, mentally, if you see the percentage of women, especially in India, has increased. People are having extremely depressed comparative to men. Why do you think women are prone to मतलब जल्दी से उनको डिप्रेशन आ जाता है, या आर दे women really a weaker sex in terms of being depressed, stressed, getting humiliated soon? What is the reason that women are very weak? Women, genetically women are stronger mentally, much Correct. more stronger than men. Okay, Okay. but nowadays एक एक पार्ट ये भी है जो हमको समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा चीजें हैंडल करनी पड़ती है विमेन को Mhm. एट द सेम टाइम। ओके, सो they just get tangled and just they're just behind key,
everything should be perfect. Correct. Okay, so that is given, and then if the see, you don't have 10 hands like Durga Mata. Okay, हाँ. she also rests sometime, so you need Correct. proper rest. But rest क्या है? दोपहर में सोने वाला रेस्ट नहीं, you need rest here. Okay, delegation of work and delegation of thoughts, वो हाँ. जब हैंडल करना सीखेंगे, then that will be easier for them. हर चीज में इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है. If Correct. see how the work at corporate level is done, something is given to someone, it is that person's part to get बिल्कुल. it done. Okay, उसमें बिल्कुल. आप माइन्यूट चीजों में नहीं जाते हैं. ठीक है, अभी नहीं. घर पे कोई आता है और चीजें, मतलब बच्चे भी आके आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और हम्म. समझिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी किचन प्लेटफॉर्म की चीजें रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम्म. आपका दिमाग उसमें कि ये इसका जगह ये नहीं है, इसका जगह ये है. यू सी दैट योर किड इज ट्राइंग टू हेल्प यू, Thank यू you. अप्रिशिएट दैट. ओके, चीज यहाँ रहेगी या यहाँ रहेगी, दैट डजेंट मैटर, बट वेयर यू हैव टू फोकस, you have to focus on your kid's nature of helping you, because he is seeing that Correct. you are working and he wants to हाँ. help you. Get them involved in घर का कुछ काम होता है तो उनके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है. बिल्कुल. आपको हर चीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत करने से भी दे गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस. ये मुश्किल है कि आप सब लोगों को खुश कर पाओ. हाँ. ये बात सही है. हम्म. You cannot make everyone happy by making yourself unhappy. हाँ. Okay, कि because you are doing this because you want to make your in-laws happy, you are doing this because you want to make friends happy, but are you able to do this? If not, accept and leave that, and Correct. see, Correct. try to communicate in a proper way. They might understand कि this is not possible, कि आज घर की सफाई नहीं हुई because I had to go and attend kids meeting in the school. That was Correct. my today's priority. So I did not clean up the house today. Then what? वो तो रोज का काम है, घर तो गंदा रोज ही होना है. So अगर ये वाला हम थोड़ा अपने आप में बदलाव ला सकते हैं सोचने में, that would be very helpful. Then you will be doing good, not to others but to yourself. Correct. बिल्कुल. Okay? And take out some time for yourself. इनकलकेट सम हॉबीज, अगर कुछ छूट गया है तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व, या फिर नया कुछ स्टार्ट करना चाहिए. लेकिन उसका स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि मैंने डांस क्लास लगाया लेकिन मुझे तो डांस आता ही मुझे नहीं है यार, तो आता इतना ही नहीं. अच्छा कर रही है क्यों. ओके, यू आर डूइंग इट फॉर सेल्फ. आप अपने आप में थोड़ा सा रहने का कोशिश करो. जितना आप बाहर हो ना, योगा में हम लोग ये सिखाते हैं, जो बाहर हो वो तुम नहीं हो, जो अंदर हो वो तुम हो. तो गो इनसाइड, नो, लुक विद इन. Correct. Correct. That will help. Wonderful, wonderful. There were so many learnings today, which I myself have learned with today's Shilpa's conversation. And my last question today, before we end the session, Shilpa, is what do you want to tell to all the women out there who are watching our show and will watch our show when we broadcast it? What do you want to tell to the modern woman, middle-aged woman? What do you want to tell them that, so many things around them and many things as we discussed earlier also. How should women be in today's generation? Woman, today's woman is the best. So you are the best version of yourself, and you just accept it and be there. Take a pause, be there, Mm. and live for yourself. Some moments at least. So That's right. that this the only thing will I guide, because women have this habit of living for others. They, क्योंकि वो ब्रॉटअप वैसे हो गए, उनका वो मेड भी वैसे ही हुए, ऊपर वाले ने उनको बनाया ही इसलिए है बिकॉज दे कैन गिव, दे आर द गिवर्स, राइट. Give us. बट Correct. अभी जो है ना, जो सिनारियो है, अगर वो अपने आप को नहीं दे पा रहे ना, तो दे आर नॉट एबल टू गिव Do अदर्स for ऑल्सो. somebody. Correct. Correct. अगर वो अपने आप को नहीं कर पा रहे तो किसी और के लिए भी नहीं कर पा रहे. वाई? बिकॉज अभी का खाना उतना हेल्दी नहीं है,
अभी का पोल्यूशन, एयर एयर का, वाटर का, एवरीवेयर वो है, दैट ऑल्सो वी हैव टू फेस. आर अदर प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, दे आर देयर. सो ये सब संभालते संभालते somewhere we Mm-hmm. need to take care of us first. Okay, so Correct. putting, not being selfish but putting yourself first can Mm-hmm. be the step you can take, and then that will work wonders, and then you will be able to do many other things. अभी अभी जैसे हमारे पास सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, आपको कुछ भी करना हो तो ठीक है, तो लेकिन आप ही ठीक नहीं हो तो आप वो सोर्सेज ऑप्ट नहीं कर पाओगे. कहाँ से करेंगे, बिल्कुल. कहाँ से करेंगे? तो पहले अपने आप को ठीक रखिए, माइंड पहले अपने आप का ठीक रखिए, फिजिकल इश्यूज जो है वो आपके ठीक रखिए, देन यू कैन डू वंडर्स. लाइक बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना है विमेन को अभी, और करेंगे जरूर. बिल्कुल. और भी डाउट्स है तो कुछ, मतलब योगा के बारे में हेल्थ इश्यूज है या मेंटली यू आर हैविंग सम, यू डोंट हैव टू हैव सम प्रॉब्लम जनरली ऑल्सो. कभी कभी वी नीड एन एडवाइस ऑफ अ थर्ड पर्सन बिकॉज वी कांट आस्क क्वेश्चन टू everybody, can't open up to everybody. Sometimes you don't feel like opening up to your friend also. Some people like Shilpa can come in because they will understand, they will not judge you. आप कैसे भी हो, आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, they will not judge you. And for that, you need Shilpa. So I will be putting all the details about Shilpa. I'll connect to her page also, and also her details, her number, so that you could have any issues. कुछ भी हो, you can connect with her. Or you generally want to speak out something, you can connect with Shilpa. And also, if you want to learn yoga on regular basis, can be connecting with her wherever you are, which part of the world you are. So that's the end of the session today. Thank you, Shilpa, for joining today, and it was wonderful because I came to know many things from you. It was wonderful joining you. Thank you. Thank you, Jyoti, for this opportunity, and even I feel wonderful, and it's good to have me. Like, thank you for having me here. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye.